Hi, very good welcome to all my viewers. आप सभी का अभिनंदन एंड ए वेरी हैप्पी हैप्पी सरस्वती पूजा टू ऑल ऑफ यू। आज हम होम्योपैथी के द्वारा खांसी का इलाज में प्रयुक्त होने वाले होम्योपैथिक मेडिसिन की चर्चा करेंगे। दिस इज़ गोइंग टू बी ए सीरीज in which we will discuss several medicines that is frequently used in the cases of cough and cold. Dear friends, cough and cold is a very acute problem in most of the cases, and the patient will not allow you enough time to tackle the problem. You have to act very quickly, and because the patient is almost under a lot of distress due to cough. So we have to be very careful in understanding the cough, the nature of the cough, the origin of the cough, the location and the concomitants that is affecting the person. Apart from it, if they have a history, their causation, the speed, everything is very, very important in the cases while tackling the cough. There are several medicine in homeopathy which acts much faster than any other system of healing, and you will see how homeopathy works wonderfully in such cases. मैं एक केस की चर्चा करने जा रहा हूँ जिसमें एक 15 साल का बच्चा जो है वो खांसी से काफ़ी परेशान है, और वो जब उसकी खांसी होती है तो उसे उठकर बैठना पड़ रहा है। वो सोने में बिल्कुल ही अक्षम है, और वह लेटने से उसकी खांसी बढ़ रही है और उसे उठ के बैठना पड़ रहा है, और उठ के भी वह जो बैठ रहा है वो सीधा नहीं बैठ रहा है, बल्कि थोड़ा सा आगे झुक करके पैर नीचे की ओर लटका करके अपने एंकल को एल्बो को नी पे रख करके थोड़ा आगे की ओर झुक करके बैठ रहा है। और यह समय है रात में करीब 2 बजे का, करीब 4 बजे के बाद उसकी खांसी में आराम होता है और सोने जाता है। और इस बीच वो इतना डरा हुआ रहता है कि वो अपने माँ को अपने पास रखता है, उसकी उंगली पकड़े हुए रहता है, माँ को सोने नहीं देता है। So this is the presentation of the cough, and on which Kali carb was given, and Kali carb worked wonderfully, and the full case of cough was eradicated within a very short period of time. So this is the clear-cut indication of Kali carb. So dear friends, whenever you will see the cough that is aggravating after midnight, particularly after 2 o'clock, and the cough is of dry cough, unproductive cough, and the person is very fearful, very frightened. He wants company at that time. Kali carb is the first medicine of choice. कली कार्ब के पेशेंट काफ़ी डरे हुए रहते हैं, और कली कार्ब खांसी के वक्त वो सो नहीं सकता है, वह बैठना पसंद करता है और आगे की ओर मोस्टली इन मोस्ट ऑफ द केसेस आगे की ओर झुका हुआ रहता है। दिस इज ऑल्सो यू विल सी इन सम केसेस दैट द पर्सन इज रॉकिंग, आगे पीछे ऐसे होते रहता है। सो इस केस में भी कली कार्ब काफ़ी इम्पोर्टेंट मेडिसिन है। कली कार्ब एक दूसरा जो पेशेंट है मुझे बताया कि डॉक्टर साहब मुझे बाहर जो गया तो एसी का लगता है कि मुझे एक्सपोजर लग गया है, और उसके बाद मेरी खांसी हो रही है, गला में अक्सर लगता है कुछ फंसा हुआ है, मैं बार बार खांस के इसको हॉक करके मैं बाहर ऐसे करके मैं उसे निकाल रहा हूँ, और थोड़ा बहुत निकल भी रहा है, जिसके बाद गला कुछ लग रहा है आराम हो रहा है, लेकिन यह तुरंत फिर बन जा रहा है। मैं कभी कभी इसे घोटना भी चाह रहा हूँ, थोड़ा सा आराम होता है, लेकिन
यह बार बार बन रहा है और मुझे बाहर इसे फेंकना पड़ रहा है। गला में कुछ रॉनेस लग रहा है, कुछ सूखापन लग रहा है, और खांसी जो है मेरी उठ रही है वो पैरोक्सिजमल कफ है, शॉर्ट कफ है। थोड़ी थोड़ी देर पे खांसी हो रही है, एक दो बार हो रही है। उसके बाद गला में हल्का लग रहा है कि जैसे कुछ छिला हुआ टाइप का, ऐसा लग रहा है कि वो छिल जाएगा। तो on this presentation you have to differentiate, because the person has Hawking disposition, there is a sensation of lump and cough is coming out from the laryngeal region, throat region, and you will see that the disposition to hawk and disposition to swallow is also present in lachesis. But in lachesis there is painful swallowing. If you swallow, you will experience some pain. And in Kalikarb, it is almost painless, and you will be able to expectorate from hawking. In lachesis, it goes down, it comes up, it goes down, it goes up, but it will not relieve you. So this is the markable difference between lachesis and Kalikarb. So इस केस में मैं इस हॉकिंग डिस्पोजिशन वाले दूसरे केस में मैंने Kalikarb दिया, एंड वो पेशेंट बिल्कुल ही आराम में आ गया। Kalikarb is very important medicine, dear friends, in cases of cough and cold, because it has a tubercular diathesis. And you will see that in many of the cases when there is a history of pneumonia, when there is a history of tuberculosis, when there is a history of lung infection, and the person has never been in good health ever since. So in such cases, in all such cases, the cases will not be removed. The complete morbid phenomena will not be removed unless and until Kalikarb is prescribed. So in all such cases where the person has a person is weak and he is susceptible to cold, and there is a tendency to sweat, as well as the person is intolerable to heat also, because वह एक ही साथ वह उसे ठंड भी लगती है, वो गर्मी भी चाहता है, और थोड़ा सा गर्मी से उसे पसीना भी आने लगता है. दिस इज वेरी वेरी रिमार्केबल ऑफ Kalikarb. In Kalikarb, you will also see that in many of the cases when the person coughs, particularly in the old age, you will see some puffiness on the face, and particularly if you notice the upper lid, you will find that there is swelling in the upper lid. So these all are very good indication of Kalikarb. Kalikarb has rawness in the throat, and in some cases, in some advanced cases, we will see some distant pain also in Kalikarb. So Kalikarb is a very good medicine in such cases. Because of tubercular diathesis, that some cases may go into chronic stage, and if you find that there is a morning aggravation, that is very very peculiar to Kalikarb, particularly between 2 a.m. to 4 a.m. You must think of Kalikarb. So this is all about Kalikarb. In the next lecture we will see another medicine. There are several medicine in homeopathy that can tackle the cases of cold and cough very easily. And dear friends, this is going to be in series, and if you have any query regarding this, you may WhatsApp me. The number that is flashed in this on the screen, you can contact over that. If you feel that my lecture is benefiting you, you do subscribe it, you do share it, do like it, and do comment. Thank you very much for watching me.